Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khayr wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. So inshallah today we are going to start our main topic, Haid. Inshallah. Can online everybody hear us? Hear me? Yes, okay. Okay, so for Haid, as I discussed earlier, we have three types of women. Okay, number one is the beginner. Number two, the one which already have established their habit. And the third is the one, that woman who has completely forgotten her habit. We call that woman perplexed woman. So I will start with the one, the habitual woman, okay? And then we'll go for the other two categories. So for the habitual women, as we discussed earlier, the minimum number of days for Haid is 3 days and 3 nights, okay, which is and we have to calculate in hours, so it totals 72 hours, the minimum for Haid. And for maximum is 10 days and 10 nights, which is 240 hours. So the way we calculate, like the example is given, if anyone starts on, like, let's say 5 a.m. on 1st May, the second day 5 a.m. will be the the first one day will complete at the same 5 a.m. at that time, and then the next day at 5 a.m. Her second day will complete. So this is how we calculate our days. We don't say 1st May is our first day, 2nd May is our second day. So we have to calculate with hours. So 24, whenever 24 hours will finish, that means that your one day, that hour, the one day is finished. Nice. Okay. As we discussed that for the Haid, basically the minimum period number of days of purity is 15 days, and there is no maximum for Haid, no maximum purity for Haid. Okay, it could be like any number of days, but minimum is 15 days. And also after you finish, like we discussed earlier, after you finish the fast and the Haid to come, there should also be a 15 days minimum gap. So example is given, if someone has like bled for 10 days and then she's pure for 15 days and then again for 10 days. And this is the minimum purity, okay? And the next example is if someone bled for 7 days and then she did not see any blood for 200 days, right? And then she has got the continuous bleeding for 100 days, right? So there is no minimum for purity. Sorry, there's no maximum for purity, but there is minimum for purity. So as after 200 days of purity, when the continuous bleeding will start, she will follow her habit, which is like 7 days of bleeding and then 200 days again for her purity. But inshallah, we will do this example. Okay, now, so when the beginning of bleeding, like when at what point you say that my Haid has started? Number one, when you see the blood coming out of the vagina, when you actually see the blood, or sometimes it happens that it doesn't come out of the vagina, but it just come parallel to the edges.
So, sometimes you don't see on your pad, but when you touch with the tissue, you see the spot or the blood. So that also is the start of your hate. And sometimes it happens that you feel that, the flow has started, but when you go and check, there is nothing. Even with touch of the tissue, you cannot see any spot or any blood, but you feel the flow inside. That means that your hate has not started. And the thing is, at times when you feel that some wetness, and you could not check at that moment, but later on after a few hours, if we go and see, and you see the blood on your underpants, or you see the tissue. So basically, if, like, let's say if there's only 1, 2, 3 spots, right, that it just come now. So your hate start from the time you saw the blood. But if you see the blood is like the amount is a lot, right, it's all wet, then you take the time from the time you sense the blood. Like when you feel that, oh, I'm feeling wet and my hate has started, so you take the time from the time when you sense that, oh, my hair has started. But if you see after a few hours, and it's just only 2, 3 spots, it's not proper bleeding, then you take the time from the time you saw the blood. Can I? Ji. Sometimes it happened or something with me. Even I didn't. No, I felt it. I didn't check it, and no, didn't help it. Or if you didn't check it, you didn't feel it. But it was so less, and it is all blood. You can see it's all blood. You don't feel it, but you say that when you see it's the old blood. Yeah. Then it will start from the time you saw it, because you don't know, you don't have the feeling. Yes. Can we not see? I mean, we can tell that at least this is an hour old or something. It depends, because everyone, because sometimes you start with very, very light, just a drop or two. Sometimes you start heavily. Yeah. So I think you have to analyze how you start your hate. But I think if you think that this blood is like now dried up and it's been like before 1 hour, 2 hours, then you can take that 1 hour, 2 hours. But if you're not like sure that you don't know, then you take from the time. Take it from this. G. An hour or two, yeah, whenever you think that it dried up, right? Yeah, then you can take it. But if you don't know, like you don't know this, my this blood is, like even if it's fresh, and then you take from the time you saw the blood. Okay, now with this habitual women as well, there are 3 types. For some women, they get periods on exact number of days, like from, for example, from 1st to 5th of the month, or from 1st to 7th of the month, they get periods on these dates every month. And for some, there are only specific number of days, but not the specific number of dates. Like they bled for 5 days or 6 days, but it could be any time of the month. It's not necessarily at the start of the month or middle of the month. And the 3rd type is that you get every month different number of days of hate, and at different dates. It's not fixed, but it is within 10 days. So your purity basically is not fixed. Fixed. Yeah. Yes. And also your number of days of your hate is also not fixed. Sometimes you get 3, sometimes you get 5, sometimes you get 7, but it is all within 3 to 10 days. So, for the first one, when you have the specific dates and the specific number of days, that is not any problem, right? You know that you are coming in those days. For the 3rd one, when you have irregular number of days, then let's say if you in the 3rd one, there's a chances of you getting your blood early or afterward. Like basically the purity is not basically the fixed in the 3rd one. So you have to be very specific with your we say, the term used, makan. Makan means after how many number of days of purity you are coming on, right? So in the 3rd one, it's not fixed. So after, let's say, 15 days gap, there should be 20 days of gap, but after 15 days of gap, she can see blood anytime, right? So whenever she sees blood, since her habit is not fixed, then she stopped praying.
right? Even if she, because she does not have any specific, like if let's say last month her purity was 20 days, right? 21 days. But this month she came on after 17 days, right? So she take that one as her hate because she does not have any fixed purity. And then it should not go, but it should not go over 10 days. Okay, it should be within 10 days, whatever number of days she sees the blood. Okay, so the problem only arises when the blood exceeds the 10 days in whatever category you are in, right? So whenever the blood goes over 10 days, you always go back to your habit and habit of the last month only. Whatever you saw the last month, the valid purity, right? You have got the periods less than 10 days and your purity was more than 15 days. So you take that number of days as your habit for this month in which you experience more than 10 days of bleeding. And how you do it, like I said, there's a term called, like in English we say place, but in Arabic it's called makan or like zaman, right? The time or the place. So the thing is, let's say, for example, the example is given here. Okay, there's a woman, her habit is 5 days of haid and 25 days of purity. Okay, so now she bled like 5 days, then 25 purity, then again 5 days of blood, but this time her purity was 26 days, and then her blood goes over 10 days. Okay, so but whenever the blood goes over 10 days, you go back to your habit and you have to see the place that at exact what day you were due on. So in this example, she was due on 26th day, right? Her head, but that day she did not see any blood. It was pure. So what she will do, she will not count 5 days from the 12th day, like the first day of the 12th, like her bleeding. She will count her first day because her days was 5 days. So she will count from, no, sorry, one, like in like 26 purity, in 26 purity, her from day 1 to 25 days is her purity, right? 26th, technically from 26th till 30th day was her haid, but on 26th she did not see any blood. Okay, so but her place was from 26th till 30th, right? If you see her exact her habit, she should supposed to come on 26th, right? But she come on 27th, right? To 27th, and then 28, 29, 30, right? So with these 4 days, she is getting her like number of days, like it is more than 3 days, right? She is getting. So then she will take only from 27 till 30th as her head, not 31 days, like from not on 30, because if you see technically, like after 26 days, you say, okay, my habit is 5 days, so I will just take 5 days from my first 12 days, my head, and then the rest will be istihaza. No, you will not count like that, because you went over 10 days, right? So you have to exactly follow your dates. So if you see here, 26th day is pure, right? But then after 26, your habit was from 26 till 30th, right? And in those 5 days, you are getting 4 days of blood, right? So now we say that we are taking from 27 till 30th is our haid, and the rest will be istihaza. And now we say that our habit has changed from 5 to 4. Okay. And also purity. Purity has increased. But we don't do like 10-day system now. No, there's still this rule 10-15, like they say, whenever you go over 10 days or irregular bleeding, you just take first 10 days as your head, and the next 15 days as your purity, and then you move on like this. But this rule, even if it applies now in most of the madaris, but if you look at the authentic Hanafi books and fiqh books, this rule has mentioned this makan rule, like this place is very important. So you have to be very specific with your dates if you go over 10 days. So in this one,
what we have seen, we see that because she is getting minimum, like basically whenever you go over 10 and you then you see that if you are getting the minimum number of your days, right, which is 3 days of Haid, right? So she's now here she is getting like 1 2 3 4 days, right, which is above minimum. So she take this from 27 till 30th as her Haid, right? I hope you all are getting. No. ये तो वन ऑफ सिचुएशन में तो समझ आ जाएगी बार बार इस तरह आगे पीछे हो रहा है Look, this if like let's say this is the first time you are experiencing this, right? So now when you analyze this, that okay, after 26 days, I got, obviously you will obviously get to know after 10 days, right, that you are going over. So when you see the 11th day, I'm also getting my period, then you think, oh, now I have to go back to my habit because I'm going over 10 days. Now you see that your previous month purity habit was 25 days and blood was 5 days, right? So you see that because my purity has increased, I got my periods of 1 day later, right? After 26 days, I got my periods. But if, let's say, if this period was ended on 9th day or 10th day, then it was fine, no issue. But since it go over 10, then you have to go back to your habit. And now you see that, okay, 26th day, even though it was pure, so but that day is my day of Haid. So you take that as your Haid, even though like obviously you pray on that day, but your like out of your 5 days of blood, 26th day you take like 27 28 29 30, but this day was pure, right? So you take the rest 4 as your Haid, and this day obviously you will pray, but now because you are getting minimum number of your days, right, in your habit. So now you say, okay, my habit has gone like my habit has changed to now 4 days, and for the next month you will take your habit as 4 days if it goes over 10 days next time. We have to see that. So this is the main problem. Whenever you go over 10 days or you started bleeding, like you started bleeding like heavily for months or for weeks, then you have to stick to your habit. उस टाइम में बट प्रे तो नहीं कर रहे फर्स्ट टाइम होगा 11 days If it goes, if as soon as you see the blood on 11th day, you have to start praying no matter what, because you know to make up for the previous then you have to analyze, okay, I have to see whether my start of the days of which I didn't pray, is it coming under my Haid days or is it not coming under my Haid days. I will, inshallah, we'll do the examples and it will and how many months you have to wait if your habits is changing? You're saying that from 5 days it's exceeding. So for next month, 2 months you have to wait for. No, you just have to see your last month valid habit. Let's say, like in this example, her habit was 525, right? So this was her last month habit, which she saw, right? So now of this month, she experienced more. Yes. So, but now her habit has changed to 4 because she's seeing a valid blood. There is no, the thing is, if you have a valid purity before your Haid, right, then that blood you can take as your habit. If there is invalid purity before your Haid, then you cannot take that blood as your habit. We will do this inshallah later on, that what can you take as your, because valid blood and valid purity, only that you can take as your habit, not invalid blood and invalid purity. So in this case, it is 26P, right, which is valid purity, because it is more than 15 days. And then out of 12B, the first 4 days is pure, is valid. This is not istihaza. It is your place, your actual number of days of your Haid. You're not coming out of your dates. So that's why the first 4 days, we are taking this here as a habit, because this is valid blood. Why it is valid? Because it is coming after a valid purity and it is coming in your habit days. That's why we are taking. If it was irregular, then we cannot say that 4 will be your habit for the next month. We will still take 525. That is valid. I will do examples, inshallah, where it is when you cannot take the blood as your habit for the next month.
So this is explaining here that 26 is the valid purity, and do not get this mixed with istihaza, because 26 is coming between two valid bloods. Before 26, there was 5B, right? 5B was valid blood, her habit. And after 26B, 26P, like 26 purity, there was 4 days of valid blood. So 26P is coming between two valid bloods. So that is why we are taking 26P as her valid purity, as a habit for her next month. G. So they have like done the breakdown in the last, like 5B, then 26B. Now out of 12B, the 4B is hate and the 8 is istihaza. So 4 add 8, like 12. So in 4, which is 4B, is valid blood because it is more than the minimum. It's not 2 days or it's not 3 days. Like it is complete, like more than complete 3 days, like 4 days. If the blood is between 10 days. G. Between 3 to 10, not between, if it is only 2 days, G. Then you don't have to do anything, like, but if it exceeds from the 10, G. then you have to go back. G. Okay. The problem arises only when you exceed the 10, when you exceed the maximum. Okay. G. Or when you started having continuous bleeding for weeks, for months, then you go back to your habit. Okay. So okay, let me just think of an example. Okay, I have started with the third category, right? With irregular one, right? Regular. No, sorry, the one which is experiencing every month different number of. So from those, yeah. G. Okay. Um, you mean when you are going over 10 days, when you experience istihaza? Um, this will come later on, because it's a detailed explanation of how you pray in istihaza. So inshallah, I think in the next class we will be able to cover this. Okay. Okay, now, so this is the example of when you take your when you go over 10 and you see the number of days in your place, right, in your number of days of hate. But let's say if the example, if I just do here, with the same example, you say that 5, like 5B, okay, and then we have 15B, then we have let's say 5B again, and now we have 30P, and then we have 12B. Okay, now in this example, let me just, okay, now in this one, sorry, let me just,
Okay. Now, in this example, she has now purity of 30p. Okay. Her habit was 5b and 15p. Okay. Now in this one, if you see that if now, and she's going over 10. Okay. So out of 30p, if you see that from day, let's say from day 16, her was her place, right? From day 16 was her day of Haid. But she's getting after 15 days. Okay. So and her her place of Haid has gone beyond. It's like 5, even if you count 5 days, it's still, you still have 10 days afterwards. So now here what you will do, from 12b you will take the first 5 days as her Haid, because her makan, her place has gone in her purity. Here you will, like in the previous example, we saw that we are taking the place, because she was finding her place in that bleeding. But in this bleeding, her place has gone beyond, and now she is experiencing 12 days of bleeding. So now she will just take the first 5 days of her Haid, and then the rest will be Istihaza, because she has lost her place here. So it's not, in this case, it's not going to be 10 days? No, because her habit was 5b. No, but it didn't come in the habit though. The place is already gone. Yes, but still you have a habit. You have to follow the habit. In the previous one as well, we were following her habit, because she is coming 1 day late. And in that case, she's only finding 4 days in her place. So that's why she took that 4 days as her Haid, because she's finding her place. But in this example, she's not finding her place here. It's way beyond, like after 15 days. If you say after basically 10 days, right? She's getting her periods now. So in this one, she will take from the day 1, from day 1, like first till 5. So is there any difference of opinion, or is it just little in this one, in this particular case? No. Generally, sometimes you bleed full-fledged. No, in this there's no difference of opinion. Whoever follows this makan, the place thingy, as there's no difference. But whoever taking the 10-15 rule, they will just say, take the first 10. Here they will just take the first 10 as your Haid, and the 2 days as your Istihaza. They will not follow the makan thingy. Okay, so the place. Are they both valid though? People are following it. I don't know, but the majority of the scholars, they follow this. Even there is the Behshti Zevar. Even in that, some argue that he didn't mention the makan place. But if you actually see, because Urdu mein, wording is a bit different. But when you see the examples written, उन्होंने भी makan का जिक्र किया है. But there are some people who is taking that as, I don't know, differently, but they are saying that even in Behshti Zevar is mentioned that you can take 10-15, but it's not actually. Sometimes because something is very, very common that everybody knows. So by that mentality, you write the shortest thing maybe. And that is why probably Behshti Zevar maybe everybody knows the makan thing. It was maybe, and that's why it's not mentioned, but it's mentioned in the examples. Maybe, huh? But this makan thing, like the classical fiqh scholars, they have mentioned in many fiqh books. It's not only in one book, but it has mentioned in many fiqh books about this makan thingy. You have to be very specific with this makan. What are you saying? So मकान तो मैंने पहले कहा था जी अगर प्योरिटी हैबिट चेंज हो रही है जी और 10 डेज से एक्सीड कर रही है तो आपको पिछली हैबिट पे जाकर उसको करना है जी अगर यहाँ पे 15 ही रहता है, लाइक 15 डेज ऑफ प्योरिटी रहते हैं और फिर 12 डेज ब्लीडिंग है, हाँ, तो फिर आप फर्स्ट वही होगा कि फर्स्ट 5 डेज आप जो है अपना हेड लेंगे एंड द नेक्स्ट इज इस्तिहाजा जी, बिकॉज यहाँ पे प्योरिटी आपकी बढ़ी, आपका बेसिकली आपका मकान चेंज हो गया, आपकी यू लॉस्ट योर प्लेस, इसलिए आप इसमें भी आप फ्रॉम द फर्स्ट 5 डेज आप अपने हेड लेंगे. बट wherever you see कि you are finding a makan, or let's say let's do one more example here.
Sorry, just can जी I? जी So अगर यहाँ पे 30 days नहीं है और जैसा कि उन्होंने कहा 15 days ही है, जी इन 15 days के बाद अगर 12 days आ रहा है जी तो भी 5 days ही जी लेंगे। लेकिन अगर 9 days होता तो we would have done 9 days then. हाँ, तो फिर आपकी हैबिट चेंज हो गई। हाँ, हैबिट जी 9 days हम ले जी 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 9, फिर आपकी नेक्स्ट मंथ के लिए आपकी 9 days ऑफ ब्लड एंड 15 days ऑफ प्योरिटी नेक्स्ट मंथ के लिए आपकी हैबिट हो गई। if it goes over 10. हाँ, तो इफ इट फिर इज 9 विद days लेंगे जी because it goes over 10. जी इफ इट इज विद इन 10 8 पे स्टॉप हो गई, then that is your habit for the next month. If it's only the problem is only when it goes over 10 days. Whenever it is within 10 days, 7 8 9 3 4 whatever number of days, that's not an issue. You can have every month different number of days unless it does not go over 10 days. तो मकान जब होगा, बस जब आपकी प्योरिटी चेंज हो रही है तो मकान उस कंडीशन में बोलेंगे उसको। मकान बेसिकली वो है कि आपकी जैसे जो प्रीवियस मंथ की जो आपकी हैबिट है ना, वो इस मंथ एग्जैक्ट वही, जैसे अगर आपकी 25 लाइक 15 डेज की प्योरिटी लास्ट मंथ की आपकी हैबिट है, तो इस मंथ 15 डेज खत्म होने के प्योरिटी के बाद जो 16th डे होगा ना, उससे हम कहेंगे कि वो आपका मकान है आपके हेत का, उस दिन आपका हेत ड्यू है। बट वो आगे हो सकता है, मसला नहीं है, लेकिन अगर वो लेट्स से कि वो 15 दिन के बाद नहीं आ रहा, वो 20 दिन के बाद आ रहा है, फिर 15 डेज से कम नहीं हो सकता ना। नहीं, अगर हो गया तो 15 दिन से कम हो गया, देन and स्टिल start from that day. हाँ, यू स्टार्ट फ्रॉम दैट। मैं भी एग्जांपल चले अच्छा ने बता दिया, मैं एग्जांपल मेंशन कर देती हूँ, 19 हो गया, अगर 20 कोई बात नहीं। 13 हो गया, 15 से कम है तो 14 तो नहीं करेंगे, देन वी कैन नॉट जी। लेकिन 15 से हम्म लेकिन अगर उसमें भी अब मुझे एग्जांपल आ रही है कि अगर वो सिर्फ 5 ही दिन होता है या 4 दिन होता है, मैं आप बताएं अच्छे एग्जांपल सर करके मैं बताते हैं। लेट्स से अगर आप ये वाली एग्जांपल लेते हैं हम, वो मुश्किल है। इंशाल्लाह एग्जांपल्स के साथ ना फिर मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। आप उसे प्रैक्टिस करेंगे ना। ये सारे होते हैं जब ये आप शुरू हो जाते हैं ना, तो सब क्या बोलते हैं, शुरू होता है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट योर डेट्स। मेनोपॉज में पागल हो जाता है इंसान, जितने लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, इस एवरीवन, मैं बेचारी इसको ही हर 2 दिन के बाद इसको कुछ बताओ क्या कहना है, तो बच्चों के साथ देखें सार करती हैं तो बहुत। और अगर ये कोई मेडिकल रीजन की वजह से ओवर ब्लीडिंग हो रही हो, फिर तब भी वो आप उससे सहारा ही लेंगे। जैसे हम कभी कभी कुछ हमारे जो कुछ होते हैं ऐसे ट्रीटमेंट जो विजाइनल होते हैं या कुछ, उसके बाद भी जो ब्लीडिंग होती है, अगर आपके वो डेज ऑफ हेड नहीं है तो फिर आप उसे इस्तेहाजा लेंगे, बट अगर वो आपके डेज ऑफ हेड में आ रहा है तो वो ब्लीडिंग आप एज अ हेड ही लेंगी। इवन कि वो दवाई के बाद हुआ था जी, जैसे समटाइम्स कोविड के बाद अक्सर लोगों ने कहा है कि ब्लीडिंग खराब हुई है। जी, इवन यू नो व्हेन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कुछ लोग लेते हैं उम्र पे जाने के लिए, लेकिन वो आई डोंट नो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉपर स्टॉप करने के लिए देते हैं पिल्स, यहाँ पे ज्यादातर वो वाली पिल्स देते हैं तो वो से आपका रेगुलेट करते हैं ब्लड, वो स्टॉप नहीं करती प्रॉपर, तो उसमें होता है कि लोगों को आ जाते हैं ब्लड ब्लीडिंग। जैसे छोड़ते हैं वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। नहीं, कुछ लोगों को तो खाने के दौरान आ जाते हैं, तो अगर आपकी ब्लीडिंग उन आपके हैबिट डेज में हो रही है देन यू हैव टू टेक दैट एज योर हेड, इवन इफ आप दवाइयां खा रही हैं फिर भी, क्योंकि आपके वो डेज हैं जी आपके वो डेज हैं। पाकिस्तान वाले जो है खत्म हो जाते हैं प्रोसेस। जी और अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र पे गई और मेडिसिन भी लिखवा के लेके गई हूँ, फिर भी हो। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे वो देते ही नहीं देते। वो देते हैं ना, क्या देते तो हैं, तो जाते हैं पर वही जाते हैं के बावजूद ये मैंने बहुत केसेस सुने हैं कि वो देते हैं आपको पिल्स देते हैं, वो आई थिंक डिफरेंट होती हैं टू व्हाट पाकिस्तान में। मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता मेडिकली कितना क्या है, बट जब तक मैंने लिए हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रोक देते हैं। अब वो आप जब रोकते हैं खाना तो उसके 2 दिन के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। जी सेम कॉइल लगा रहे होते हैं ना, तो वो पीरियड्स में कॉइल लगाते हैं, उम्र में कोई लगता है। हाँ, उसी दौरान लास्ट वीक कहते हैं कि ब्लड कम हो जैसे फिनिश होने वाला है, वो अदर वही सिचुएशन के वो आपको बाद में भी कॉइल लगाने के बाद भी चलता खासा आप ना रोक नहीं सकते, ये लॉ नहीं है। आप प्रोडक्टिव साइकिल का पे किसी तरीके से आप रोक नहीं सकते,
before 45. तो पाकिस्तान में तो दे देते ना, वो तो रोक देंगे। वो जो साइकिल आपका चल रहा है ना, वो यहाँ पे अलाउ नहीं है रोकना, इसलिए वो मेडिसिन देते हैं सिर्फ आगे पीछे करने के लिए। That makes sense. हाँ, Okay, now with this example, uh, वो साइकिल रोक देते हैं, you just stop, साइकिल को delay कर हार्मोन्स बनना बंद कर देते हैं। यहाँ पे वो डिले करते हैं, जी हार्मोन्स बन रहे होते हैं, यहाँ पे डिले करते हैं, वहाँ पे वो टोटली शायद मेरे ख्याल उसके अमाउंट जो देते होंगे ना वो कम होती होगी। वही है कि वो भी बंद होके जब छोड़ते हैं दवाई तो शुरू हो जाते हैं, ये भी दवाई छोड़ते साइड हैं, इफेक्ट्स तो दोनों में है। नो आई मीन कि जब दवाई लेना बंद कर देते हैं जी। तो फिर शुरू हो जाते हैं, जी। वहाँ पे भी शुरू होते हैं, यहाँ पे भी शुरू लेकिन आई थिंक ये जो होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, ये आपका रेगुलेट करते हैं ब्लड। आई थिंक ये बिल्कुल स्टॉप नहीं करते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आगे पीछे करते हैं। जी। ओके, अब देखिए ये वाली एग्जांपल के साथ, अब यहाँ पे इनकी प्योरिटी कम हो रही है, ठीक है। उनकी हैबिट है 5B and 15P, बट दिस मंथ शी एक्सपीरियंसिंग 13 डेज ऑफ, सॉरी ये P है, मैंने B लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद अब आपको पता है कि लेस देन 15 डेज हेड नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें अब उसकी जब हैबिट 15 डेज है तो 15 डेज के बाद ही शी विल स्टॉप प्रेइंग, क्योंकि उसकी हैबिट 15P है। तो 13P पे 14th डे पे उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, बट शी विल नॉट स्टॉप प्रेइंग ऑन 14th डे, बिकॉज 15 डेज से कम आपके हेड नहीं आ सकते। सो शी विल कीप ऑन प्रेइंग till 15th day, और फिर 16th day पे जाके she will stop praying and she will take the first 5 as her head out of 12 days, or the rest will be istihasa. And that is why you need to know कि when you started जी। actually, so that you can जी, और अगर let's say here her habit was this 6 and this is okay, अब let's say कि उनकी हैबिट जो थी ना वो 16P थी, राइट 16P थी, और उनकी प्योरिटी की और ब्लड हेड की हैबिट 6 डेज थी। तो अब इसमें भी शी विल नॉट स्टार्ट प्रेइंग आफ्टर 15 डेज, बिकॉज उनका जो प्लेस है इट्स कमिंग आफ्टर 16 डेज। तो 17th डे पे, फ्रॉम 17th डे she will take the 6 days as her head, not right after 15 days. इसमें देखिए मैंने एग्जांपल चेंज किया अभी। नाउ शी her habit was 16P, 16 purity and 6 days of blood, ठीक है। and now she is getting blood after 13 days. तो 14th day पे she is getting blood, but in this example she will not stop praying after 15 days because her habit is 16P. तो 16 days जब खत्म होंगे, then from 17th day she will take that bleeding as her head for the next 6 days. तो 60 तब तक प्रे करेगी 60 जी, तब तक प्रे करेगी। और फिर 16 फिर 6 days आपके head, and then again she'll start praying from 7th. My question was कि अगर यहाँ पे जैसे 5 है, फिर 16, then 6, 13 के बाद let's say it's only in this case 5. Yeah. जी, in this case is 5, right? Or 4 से ज्यादा समझ में आ जाएगी। Okay, 4, ठीक है। So now अब 13P के बाद she has to wait for 3 more days. 3 more days, and then which means out of 4, out of Only blood water. she's only doing out of this 4, मेरा पेन कहाँ है? Okay, out of this 4 days, like अगर 13 के बाद देखिए 14, 15, 16th, right? 3 days निकल गए प्योरिटी में, right? So she's only finding 1 day blood, right, in her place. So we'll say this is not head completely, ये head है ही नहीं उनका। Even though it is more than 3 days. जी, क्योंकि इनकी प्लेस नहीं है, और इवन इफ लाइक प्लेस अगर आप देखें भी 16P के बाद शी इज ओनली फाइंडिंग 1 day of blood which is less than 3 days, that cannot be a head. So the whole total उसको मास कर देंगे। हाँ, all of it. फिर वही बात है ना कि उसको अगले दिन वेट करना। जी कदा हाँ, obviously वो एक दिन समझेगी ना कि मेरा वो है, तो जी इसमें यही होता है कि then you have to do कदा। कौन चीज ये
जो आपने पहले एग्जांपल दिया था इसमें अच्छा ये ये वाला जो ऊपर वाला है, जी जी ऊपर करने वाला है। अच्छा ये वाला जी ये वाला नहीं नहीं, वो आपने लिखा था। अच्छा सॉरी मैंने ये वो कर दिया, एक मिनट। इसमें प्योरिटी जो थी वो 15 डे हैबिट थी, फिर 5 डे ब्लड था, फिर 13 प्योरिटी और लास्ट में 12 डेज जो ये वाला देखें, ये कह रही है ना। जी 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 या 5 डेज ब्लड था, इसमें 60 डेज। तो इसमें वो 15 तक प्रे करेगी, जी 15 डेज तक जी, उसके बाद 16th डे से 16 से उसकी हेड मानी जाएगी। जी लेकिन क्योंकि ये एक्सीड कर रही है मोर देन 12, लेकिन जो शुरू के दिन है अगर वो है इस्तेहाजा है तो लेस देन 12 नहीं हो गए वो के दिन। नहीं देखिए 13 डेज के बाद, लेकिन 13 प्योरिटी है राइट, शी स्टार्टेड ब्लीडिंग ऑन 14th डे, उसे पता है कि 15 डेज से कम पीरियड्स नहीं हो सकते। 15 डेज से कम, लाइक 15 डेज से पहले आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाए, लाइक लेट्स से यू स्टॉप टुडे, योर हेड इज फिनिश टुडे राइट, यू स्टार्टेड ब्लीडिंग अगेन आफ्टर 13 डेज, तो वो आपकी ब्लीडिंग हेड नहीं हो सकता, बिकॉज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज मिनिमम 15 डेज राइट। सो शी ऑटोमेटिक नो इट इज 13 डे पे अगर मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है देन आई हैव टू प्रे टिल, क्योंकि इनकी हैबिट 15 डेज है राइट, हैबिट है, तो ये 15 तक पढ़ेंगी राइट, बिकॉज शी इज ब्लीडिंग स्टिल। सो आफ्टर 16 ऑन 16th डे शी विल स्टॉप प्रेइंग, क्योंकि 16th डे से उनका हेड शुरू हो गया, ठीक है। तो 16 से वो क्या कहते हैं 6 दिन अपना हेड लेंगी। अगर 6 दिन नहीं होता, अगर 2 दिन में ही बंद हो गया लिखा है जी ये 12 डेज जो है वो 13 से शुरू हुए हैं तो नो 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 नो, नहीं हाँ मतलब ये डे 14, हाँ 14 से शुरू हुए 14। एग्जैक्टली अच्छा जी जी जी, 2 निकल गए, 2 या 3 तो 10 रह गए, 10 तो हेज के दिन हो सकते हैं। तो हैबिट 10 पे आ गई है। नहीं 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 नहीं, देखिए ये ना टोटल हमें ब्लीडिंग को देखना होगा। टोटल ब्लीडिंग, द डे यू स्टार्ट ब्लीडिंग और जब वो खत्म हो रही है, ऑब्वियसली इसमें आपको अगर किसी का ऐसा होता है प्रैक्टिकली शी विल नॉट नो के, बट इसको ये चीज तो पता है ना कि मैं 13 डेज के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई 14th डे पे, तो डेफिनेटली 14-15 तो मुझे नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। ओके 16 डे से शी विल स्टॉप प्रेइंग, अब 16 17 18 19 20 21 ये कितना हो गया 13 40 15 and 6 like 8 days हो गए ना, आउट ऑफ 12 8 डेज हो गए, ठीक है। अब क्योंकि अब उसको है कि मेरे मे बी ब्लीडिंग रुक जाए राइट, क्योंकि उसके अभी सिर्फ 6 डेज आपके हेड में गए हैं, शी स्टिल ब्लीडिंग राइट। सो अब इस वाले केस में ये होता है कि सिंस यू नो कि आपकी ब्लीडिंग पहले स्टार्ट हो गई है राइट, सो इट कुड हैपन कि वो 10 डेज के ऊपर एक्सीड ना करे, क्योंकि 13 डेज के बाद आपको नहीं पता कि ब्लीडिंग 10 डेज के लिए हो रही है या ब्लीडिंग आपकी 12 डेज के लिए हो रही है। तो 13 डेज के बाद 2 दिन वो वेट कर, 2 दिन नमाज पढ़ेगी, 16 डेज से शी विल स्टॉप प्रेइंग फॉर 6 डेज टेक्निकली। और अगर 7th डे उसको फिर ब्लीडिंग शुरू हो रही है कंटिन्यूसली, तो इट्स अप टू हर कि वो या तो वेट करेगी, तो अगर 10 से ऊपर चला गया देन शी हैज टू डू कदा, ठीक है, ये उसका ऑप्शन है, या क्योंकि उसकी हैबिट है, या वो फिर 7th डे से शी विल स्टार्ट प्रेइंग। और अगर खुदा न खास्ता ब्लीडिंग 10th पे ही रुक जाती है, सो शी विल नॉट बी अकाउंटेबल, लाइक उस पर कुछ बस इस्तग़फ़ार करेगी, क्योंकि नाउ अगर हम देखा जाए तो उसकी जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप 10 पे तो हो गई है राइट, लेकिन वो विद इन उसकी में है ना, लेकिन हाँ मतलब उसकी मतलब बेसिकली एक्सीड नहीं हुआ, तो उसको जो इस्तिहाजा वो इस्तिहाजा काउंट नहीं होगा फिर। 2 दिन पहले इस्तेहाजा हाँ हुआ और बाद 5 वाला दिन नहीं बाद होगा, इस्तिहाजा नहीं होगा जी, प्योरिटी 15 नहीं। में वो शुरू के सहारा छोड़ के बाद के 10 डेज के अंदर अंदर अगर ब्लीडिंग रुक गई है तो सॉरी क्या 10 डेज शुरू के 2 सहारा के छोड़ के बाद की 10 डेज में अगर ब्लीडिंग रुक गई विद इन जो शुरू के 2 दिन हैं उसको मिला के, और बाकी के जो डेज हैं शुड बी टोटल 10 डेज टोटल 10 जी, टोटल 10 डेज, प्योरिटी वाले भी मिला जो 2 दिन उसकी प्योरिटी में ब्लीडिंग हो रही जी उसको भी मिला के शुड बी टोटल 10 डेज।
क्योंकि उन 10 डेज के अंदर 2 दिन तो इस्तिहाजा हैं, राइट। फिर अगर हम देखे जाए तो बाकी जो 8 डेज हैं, 8th डे पे उसकी ब्लीडिंग स्टॉप होगी, तो वो उसका हेद होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया? ऑनलाइन इज इट ऑल क्लियर? Yes. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं क्या बता रही थी कि अगर प्लेस, अच्छा ये हो गई कि एक प्लेस आपकी, इसमें तो होगी ना कि यू डोंट फाइंड द प्लेस हियर। I was thinking one more example. इसमें अच्छा, और कोई आप लोग को कुछ आ रहा है दिमाग में कि अगर ऐसा होता कुछ डिफरेंट? और ये सिचुएशन अगर नए नए जिस तरह लड़कियों को स्टार्ट होता है तब हुए तो जी, वो हम अभी वो उसी पे आए, नेक्स्ट उसमें आएंगे जी। ठीक है, तो बस आपको बस अपनी मेक श्योर कि आपको अपनी हैबिट आपको पता हो, ठीक है। एंड इन केस व्हेनेवर यू गो ओवर 10 डेज या आपकी प्योरिटी कम हो, तो यू हैव टू एग्जैक्टली फॉलो योर हैबिट फ्रॉम द लास्ट मंथ। तो आप जैसे कैलेंडर में एक एक करके काउंट करके, ओके अब ये मेरी प्योरिटी कम हो गई है, लेस देन 15 डेज है, बट मेरी हैबिट जो है वो इतने दिन पर है, तो मुझे उतने दिन तक नमाज पढ़नी है। एंड देन आई कैन स्टॉप प्रेइंग इफ आई कंटिन्यू टू ब्लीड। सेम विद द हेड, अगर 10 डेज ऊपर चला गया है तो आई हैव टू जस्ट फॉलो माय नंबर ऑफ डेज। अगर उसमें आपकी वो एग्जैक्ट प्लेस आपको नहीं मिल रही, देन यू टेक योर नंबर, लेट्स से हमने कहते हैं 1 to 5, अगर लेट्स से कि आपकी हैबिट है फ्रॉम 1st of the month till 5th of the month, right? But this time you started bleeding from 6th of the month, right? And you go over 10 days, right? तो अब इसमें आपकी प्लेस तो हटी है ना, 1 to 5, you don't have your place, so you will take the number of your days, so 5 days from the 6th till to 10 11 आप अपने हेड लेंगे। एंड इफ यू फाइंड योर प्लेस, और उस प्लेस में भी मिनिमम 3 days ब्लड होना चाहिए। अगर मिनिमम 3 days ब्लड नहीं है तो देन यू विल जस्ट टेक द नंबर ऑफ डेज, 5 days। ब्लड का ये नहीं है कि वो हैवी है या लाइट है, नहीं, उसमें कोई एक स्पॉट भी हो सकता spot है। भी है तो- आई मीन कल मैं बता ना कि हेयर के डिफरेंट कलर्स होते हैं, इट्स नॉट ओनली रेड, इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी ग्रीन, इट कैन बी एनी कलर, राइट, बट वाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर लेट्स से अगर आप नॉर्मल जो डेज होते हैं आपके प्योरिटी वाले, उसमें अगर आपको डिस्चार्ज येलो कलर का हो रहा है, ठीक है, तो वो येलो कलर हेड का कलर नहीं हो सकता फिर, ठीक है। तो अगर आपके मतलब आई डोंट नो, मैंने अब तक कोई ऐसा केस नहीं सुना कि जिसमें आपको 2 दिन ब्लीडिंग हुई, देन आपको 1-2 दिन येलो डिस्चार्ज हुआ, देन अगेन 2 दिन ब्लीडिंग हुई। येलो डिस्चार्ज हमेशा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ब्लीडिंग आता है, जो मैंने अपने केसेस सुने हैं। मैंने कोई ऐसा बीच में सुना नहीं कि कोई 2 दिन येलो। बट अगर किसी को कहते हैं कि अगर किसी को येलो डिस्चार्ज नॉर्मली नहीं होता, तो अगर जी तो अगर उसको लेकिन वो प्योरिटी के डेज के नाम है। हाँ, और डिस्चार्ज का ये बता दूं कि डिस्चार्ज का ये है कि अगर आपका डिस्चार्ज बिल्कुल क्लियर वाइट है, और वो भी यू हैव टू चेक व्हेन इट इज वेट। अगर आपके अंडरपैंट्स पे आके ड्राई हो गया है, देन यू कैन नॉट सी के एनालाइज के ये कौन सा डिस्चार्ज है। बट अगर आपने टिश्यू से चेक किया क्लियर वाइट, तो उस डिस्चार्ज में कहते हैं कि इट इज नॉट, इट डज नॉट इनवैलिडेट योर वुदू, ठीक है। बट क्योंकि स्कॉलर्स कहते हैं कि यू डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, क्योंकि 3 जगह आता है, एक सर्विक्स होता है, एक विजाइना होता है, और एक बिटवीन विजाइना एंड सर्विक्स होता है। तो जो अगर आई थिंक जो सर्विक्स से आता है, दैट इज सॉरी, एक स्वेट होता है, ठीक है, एक सर्विक्स से आता है और एक विजाइना से आता है। जो स्वेट होता है ऑब्वियसली दैट इज नॉट द ब्रेकर ऑफ द वुदू, जो विजाइना और सर्विक्स से आता है दैट इज द ब्रेकर ऑफ द वुदू। बट द थिंग इज if you see the wetness, you don't know from where it is coming. So if it is clear white, बिल्कुल हल्का सा लाइट येलो भी नहीं और कुछ भी कलरेशन उसके अंदर नहीं है, क्लियर व्हाइट है, then it means that
it is not the breaker of the wudu, but the scholar says to be on the safe side, if you are at home and you can change and do wudu, then it's better to do that. But अगर आप कहीं बाहर हैं और आपने देखा तो you can pray. Or for any color, जी, और अगर for any other color, if you see, that is the breaker of the wudu. एक white होता है, एक transparent होता है. जी बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि Transparent. नहीं, एक होता है बिल्कुल जैसे आपको लगता है ना कि लाइक बिल्कुल एक होता है स्टिकी सा होता है, राइट, नॉट द स्टिकी वन, बिल्कुल जो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट जो आप कहें ना, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, हाँ, नॉट द स्टिकी वन, कि आपको लगे सिर्फ वेटनेस है ये, इट्स नॉट समथिंग स्टिकी और एनीथिंग कमिंग आउट, बिल्कुल जो वेटनेस होती है ना उसका बेसिकली. जो पीरियड से पहले जो ऐसे ही वेटनेस जी पिंकिश भी होता है. हाँ, तो वो वही है कि अगर आपके वो डेज से पहले आप देख रही हैं तो इट्स ऑल फाइन. अगर आपके डेज में आ रहे हैं देन यू हैव टू टेक दैट एज योर हेड. अच्छा, अब इसमें अर्ली ब्लड आ जाता है. जी हाँ, मैं वही बताने वाली थी कि इसमें डिपेंड करता है कि इसमें एक ऐसा लेट्स से अगर आपकी हैबिट जो है 5th of the month है, डे 5 को आपको आना है, बट दिस टाइम आपको पिंकिश ब्राउन स्टार्ट हो गया फ्रॉम 3rd of the month, बट इफ इट डजंट गो ओवर 10 days तो आप फ्रॉम डे 3rd से अपना पीरियड्स काउंट कर सकती है, क्योंकि वो आपका अर्ली ब्लड हो गया है. अर्ली ब्लड जब वैलिड होता है जब इट डज नॉट गो ओवर 10 days. So you can have. No, but again, when we started, obviously we stopped praying. Even early, जो 3rd पे शुरू हुआ है, हाँ. it was light, very light pink. जी. But because the purity was 15 days already, so we will take it as a हाँ, light. इसमें एक रूल है, इट्स नॉट 100% एक्यूरेट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूल वर्क हुआ है कि अगर जैसे आप जितने भी डेज अर्ली हैं, राइट, अगर आप 4 days अर्ली हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आपकी हैबिट जो है वो 5 days की है, तो व्हेन यू सम अप टुगेदर वो 4 days और 5 days, इफ इट गोज ओवर 10 days, ठीक है, देन यू डोंट स्टॉप प्रेइंग, क्योंकि वो मे बी आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी. बट इफ इट इज लेस देन 10 days, like 4 and 5 is 9, right, तो you stop praying. ये एक रूल है, बट इट्स नॉट 100% एक्यूरेट फॉर ऑल. You don't. क्योंकि तो जब शुरू हो जाती है जब ही रुक जाएंगे ना हम. It's not going to be that we're going to see. वो तो फिर ऑब्वियसली आपको अगर इफ इट इज आफ्टर वैलिड प्योरिटी 15 days से ज्यादा पे आपको कभी भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, एंड यू नो कि आपको इरेगुलर ब्लीडिंग नहीं होती, यू नो कि यू आर नाउ फिक्स्ड आपके डेज होते हैं, तो ऑब्वियसली यू स्टॉप प्रेइंग. बट यू हैव टू सी अगर वो 10 days ऊपर गया, देन यू हैव टू फॉलो योर हैबिट एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज पे जो आपकी ब्लीडिंग थी और वो हेड के आपके डेज थे, सिर्फ वो आप हेड लेंगी, और जो शुरू के आखिर के अगर वो डेज आपके हेड के नहीं थे और आपने नहीं नमाज पढ़ी तो उसमें फिर आपको नमाज का अदा करनी पड़ेगी. वही तो कह रही हूँ, वेट करेंगे. अगर जैसे 11th डे आपने देखी ना ब्लीडिंग या स्पॉटिंग, तब से देन यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू कैलकुलेट. क्वेश्चन पूछा आपको, लेकिन स्पॉटिंग सपोज तो आपको 1.5 महीने बाद हुआ, एक दफा याद नहीं होती. जी जी स्पॉटिंग हुई है जी आगे कुछ भी नहीं जी लेकिन तीसरे दिन फिर ब्लीडिंग चौथे दिन जाकर स्टार्ट हुई. जी. वो जो 2 दिन 3 दिन बीच में होंगे, हाँ, वो आपके वो पूरा फ्रॉम डे 1, अगर आपको, हाँ, वो फर्स्ट डे से आपका हेड है, अगर आपको 2 दिन के बाद अगर आपको 3rd डे 4th डे ब्लीडिंग होती है तो वो डे 1 जो आपने खाली एक स्पॉटिंग देखी ना जब से आपका हेड शुरू है. लेकिन अगर आपने लेट्स से 1 दिन स्पॉटिंग देखी और 3 दिन तक कोई स्पॉटिंग नहीं है, ठीक है, उसके बाद लाइक लंबा गैप आ गया, तो वो 1 या 2 दिन स्पॉटिंग आपके हेड नहीं हो सकते. नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी. नहीं, अगर आपको आगे ब्लीडिंग हो, अगर आपको आगे ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, हाँ, लेकिन इसमें ये कि अगर ऐसे आप कहेंगे कि आपको 1-1.5 महीने बाद हो रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको ऐसी स्पॉटिंग स्टार्ट हुई है और ऑन एंड ऑफ भी करते करते 10 days से ऊपर चली गई, तो फिर आपको अपनी 1.5 महीने की पहले वाली हैबिट को देखना पड़ेगा कि वो कितने दिन की थी, 5 दिन या 4 दिन, तो उन दिनों में से सिर्फ 5 या 4 दिन या 6 दिन आपके हेड होंगे और बाकी आपके इवन दो इट्स ओनली स्पॉटिंग, वो फिर इस्तेहाजा में आ जाता है. जी जी, बहुत से लोगों तो साल 2 साल जी, उसके बाद जब भी आएगी तो उसकी उनकी वो नई हैबिट होगी. फिर अगर वो अगर उनको याद है कि उनकी 2 साल पहले की क्या उनकी हैबिट थी, तो इट्स गुड कि वो वही हैबिट लेंगी. बट अगर उनको याद नहीं है तो फिर वो कहते हैं कि जिनको याद नहीं है ना हैबिट का, उनको चाहिए कि वो वाइल्ड गेस लगाएं टू द मैक्सिमम कि कितना तक होता था, 9 days 8 days. कुछ वाइल्ड गेस तो इंसान को याद रहता है ना कि कितनी होती थी मुझे.
सारे लेसन खत्म होने का वेट कर रही हूँ, उसके बाद हर टाइम लगता है हाँ इससे मैं रिलेट करी, लेकिन ये मुश्किल है कि नहीं है कि मेरा टाइम है। आई थिंक कुछ एग्जांपल्स और कर लें। अच्छा जी, तो अब मुझे कैसे पता होंगे कि मतलब मेरा हाँ तो आपको कुछ तो याद है ना कि आपको कितने होते थे, इवन लाइक रफ वाइल्ड गेस, उतना आप याद रखें। हाँ तो फिर आप उतना ही फिर बोलेंगे। हाँ जी, क्योंकि फिर अगर आपको ब्लीडिंग अगर स्टार्ट होगी जी, तो आपको वही अपना एस्टिमेट जो आपको वाइल्ड गेस है ना कितनी होती थी अभी तो हम इसके बारे में लर्न कर रहे जी। हाँ तो आप आपको इतना तो याद है ना कितनी होती थी, बस आप उसको फिर वही लेके चलें, लेकिन आपकी प्योरिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब आप जब भी आपको स्टार्ट होंगे ब्लीडिंग, तो आप ब्लीडिंग तो वही लेंगे जो आपकी पहले थी 7 डेज 9 डेज जो भी, बट प्योरिटी आपको देखनी पड़ेगी कि प्योरिटी आपकी 50। जी 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 लेकिन ये होता है कि फिर आप मतलब आप जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो आप 7 इयर्स प्योरिटी हैबिट नहीं लेंगे अपनी, नहीं वो प्योरिटी फिर वो आपकी जो अब आएगी ना, फिर वो अगर आपको पहले की याद है ठीक है ना, फिर प्योरिटी आपकी नई हैबिट बनेगी। जी हाँ जी जी जी। और कोई क्वेश्चंस हैं या कोई केस या कोई एग्जांपल किसी को है दिमाग में? जी, अगर फिर आप कह रही हैं 15 डेज ड्राई होने चाहिए प्योरिटी के, तो जी अगर 14th डे प्योरिटी के हैं और 15th डे वेट है एंड देन 16 जो है वो ऑलरेडी डेट है पीरियड की, तो जी वो जो 15th डे है वो काउंट इस्तिहाजा में होगा कि पीरियड में होगा? क्योंकि डेज प्योरिटी के तो 14 होंगे। नहीं देखिए, आप ऐसे काउंट करते हैं कि जब आपकी जब पीरियड्स खत्म हुए, लेट्स से आपके आज लेट्स से दोपहर 3 बजे आपके खत्म हो गए पीरियड्स, राइट? हम्म कल दोपहर 3 बजे आपका एक दिन होगा, तो आप इस तरह काउंट करते हैं अपना पूरा दिन, लेकिन कंप्लीट 15 डेज जैसे 240 15 डेज सॉरी कितने होंगे, 15th डे जो है ना वो भी आप जब कम पूरा लेंगे एज योर प्योरिटी, वो हेद में शामिल नहीं करते। जब नहीं, कम वही मैं पूछ रही हूँ आपसे कि अगर पीरियड आने हैं जैसे 16th डे पे एवरी मंथ पीरियड आते हैं, और अगर वो 15th डे पे आ रहे हैं एक मंथ में, तो वो वाला डे किस में काउंट होगा? वो इस्तेहाजा में काउंट होगा, क्योंकि ओह अगर अच्छा। कंप्लीट 15 डेज नहीं हो, और कंप्लीट का मतलब आप ऐसे कैलकुलेट कर सकती हैं टू बी स्पेसिफिक कि जब आपके लास्ट हेड खत्म हुए ना, हम्म और आप उसको फिर जो भी टाइम पहले से अगर आपके 3 बजे खत्म हुए हैं, तो अगले हम्म बजे आपका वो एक दिन कंप्लीट होगा, ठीक है? तो इस तरह आप अपने 15 डेज काउंट करके रख सकती है पहले से कि मेरे 15 डेज इस दिन पे इस आवर खत्म होंगे। तो लेट्स से कि अगर आपके 15 डेज किसी भी दिन एट 3 PM खत्म हो रहा है, ठीक है, इस जी तरह तो उस 3 PM के बाद जो भी आप रीडिंग देखेंगे वो आपका हेड में आएगी, ओके इसलिए हम इसको ना आवरली कैलकुलेट करते हैं। ठीक। आपको फिर आपको स्पेसिफिक, क्योंकि आप यू एंड अप मिक्सिंग अप विद इस्तेहाजा, जब ऐसे इरेगुलर केसेस होते हैं ना, तो उसमें कुछ जी के डिफरेंस से भी इस्तेहाजा और हेड में फर्क आ सकता है। ठीक। है कि जब आपका हेड खत्म हो तो आप वो टाइम और डे नोट कर लें, तो उससे आप कैलकुलेट करें 15 डेज आवरली बेसिस पे। ठीक, एक वैसे तो नेक्स्ट लेसन में आप बताएंगी, लेकिन इफ यू डोंट माइंड टेल मी कि एवरी टाइम जब वैसे तो वुजू हर बार करना ही होता है जैसे इस्तिहाजा के अंदर, लेकिन जब नमाज पढ़ने लगे हैं तो वो क्लोथ्स भी सारे चेंज करने एवरी टाइम, नो या नो नो, इसकी कोई अगर आपके कपड़ों पे कुछ नहीं है तो आपको कपड़े चेंज नहीं करने, सिर्फ आपको अंडर पैंट्स या आपने अगर पैंटी लाइनर लगाया हुआ है सिर्फ आपको वो चेंज करना है, और कपड़े चेंज नहीं करने। अगर बहुत ज्यादा एक अमाउंट होती है, कहते हैं अगर उस अमाउंट से ज्यादा आपका
जैसे हम अगर हम हाथ की हथेली बनाए ना, तो जो बीच में जी सर्कल होता है ना, जो गड्ढा बीच में गैप बनता है, जी तो ये कहते हैं कि अगर इस सर्कल जो छोटा सा बन रहा है हाथ के बीच में, इससे अगर ज्यादा अमाउंट आपका डिस्चार्ज है तो आपको चेंज करना है, बट अगर इससे कम है तो आपको चेंज नहीं करना। ओके आपका वुदू ब्रेक हो जाएगा, वुदू तो आपको करना पड़ेगा। जी ठीक ठीक है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में और इसको डिटेल में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। ओके अंडरस्टूड थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एंड नेक्स्ट वीक वी हैव क्लास ऑन वेडनेसडे ना, वेडनेसडे सेम टाइम। जज़ाकल्लाह। जी जी।